इट इज़ वेरी गुड। मैंने यहाँ का सिस्टम मुझे बड़ा सही लगा, हार्बर का, ब्यूटीफुल। So finally we are saying bye bye to this beautiful bathroom। मुझे बस इसी का दुख है भाई, इतना खूबसूरत बाथरूम दुनिया में और कहाँ मिलेगा यार मुझे। इसको तो मैं बस आके कितनी बार एवं ही निहारता था और पता नहीं 50 बार नहाऊंगा जस्ट यहाँ के मज़े लेने के लिए, ओपन स्काई के नीचे बात। So we are saying bye bye to this wonderful property। Look at the weather today, making this property even more pleasant। This was one of the most beautiful stays that I have ever been in, and I wish that further ahead in my life, on whatever tour I am or whatever trip I am, I get to be in more such wonderful places। This is amazing, man। Just look at the view here, the Tempecan heritage। If you want to spend your time living in a beautiful scenic place, you must come here। It's wonderful, the Tempecan, yeah। हम आ गए हैं सनूर हार्बर, जहाँ पूरा फ़्लाइट वाला सिस्टम सा हो रहा है, बैगेज चेकिंग वगैरह सब, ट्रांसफ़र्स। यहाँ की स्टाफ हेल्पफुल हैं, आपका बैग ले जाते हैं खुद ही, साथ में सब कुछ करा देते हैं। और डिटेल्स मैं आपको आराम से दूंगा, बट राइट नाउ 8:30 की बोट है, तो मैं थोड़ा पता करता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। वो देखिए, वो सामने वो ट्रॉली में हमारा लगेज जा रहा है, साथ में 2-3 और लोगों का। हमको उसका कोई आइडिया नहीं था, इन्होंने अपने आप ही कराया जो कराया। और यहाँ से अब हमारी बोट सेमूबा, क्या नाम है, सेमाबू से हम जा रहे हैं। हाफ आवर की ट्रिप रहेगी टू नूसा पेनिदा। इट इज़ वेरी गुड। मैंने यहाँ का सिस्टम मुझे बड़ा सही लगा, हार्बर का, ब्यूटीफुल। हम गए, क्लूक की बुकिंग अपनी दिखाई और वहाँ पर हमको जो है ये आई कार्ड्स दे दिए गए हैं एंड ये टिकट्स दे दी गई हैं। और बस यहाँ पे दिखाया, इन्होंने खुद ही हेल्प करी, स्टाफ लेकर के चला गया, सब कुछ करा दिया है। अब बोट में दिखाऊंगा आपको। लॉक नहीं किया, अब वो तो अब आधे घंटे बाद ही दिखेगा हमें। सेमाबू तो ऑलरेडी फिल्ड है यार। दिस इज़ आवर बोट सेमाबू। थैंक यू। तो हम ये निकले हैं नूसा पेनिदा से और हमने बाहर से ही स्कूटी ले ली है, जो 2 दिन के लिए हमें मिली है फॉर 150,000 में। और सामने आपको एक स्कूटी पे बंदा दिख रहा होगा। हमारा कैब का यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीन नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही ऑफ़र किया कि हम आपका लगेज पहुँचा देंगे, तो आप हमें पैसे दे देना। तो वो हमारा लगेज लेके जा रहा है आगे स्कूटी पे, जो 70,000 में है। और एक चीज़ का हमें नहीं पता था कि नूसा पेनिदा की एंट्री के लिए आपको अलग से पे करना है, विच इज़ ऑफ 25,000 पर पर्सन। तो हमें 50,000 वहाँ पे भी देना पड़ा है।
सो लेट्स गो एंड सी कि और कहाँ कहाँ हिडन चार्जेस हैं ऐसे जो जिनका हमें नहीं पता है। हाँ सीधे चल रहे हैं। Okay, so this is the second property. This is here on Nusa Penida. You can see there is a steep climb here to the property, and this is the Denbencingah stylish triangle cottage. We could check in early. Actually, they were saying before that there is no early check-in, but they have allowed us early check-in. I think the guests before left early. So this is our property. It's actually beautiful. You can see, I'll show you the property from inside. Cheers. That's the view. So we have TV, the music system, and there's washroom behind this curtain, bathroom, then wash basin. That's the mini bed here, but that's not it because we get to go upstairs as well. And there is a fan, and there is the AC, and first floor we have our bed here, so we'll be sleeping here, and that is the view which we are going to get in the morning. And that's amazing. It's beautiful, man. I like this property.